Okay, students, so now we are going to start a mock interview for our student Amit Kumar, and this mock is for HPCL. So, Mr. Amit, first of all, you tell us about yourself. Thank you, sir, for giving this opportunity. My name is Amit Kumar. I belong to Nalanda district in Bihar state. My father is a farmer and my mother is making the house. I have two younger brothers. I have completed my schooling from my native town. I did my B.Tech from Kolkata Techno India College. I have also completed my M.Tech from NITIE Patna in 2021. Sir, it's my passion to contribute in renewable energy resources. So I have done my M.Tech thesis on biodiesel. Okay. So after M.Tech, most of the students prefer to go for PhD. So did you apply Yes, for sir. PhD also? No, sir, I haven't applied. Okay. So what is your short-term goal and long-term goal? Sir, my short-term goal is to, sir, settle down in, sir, HPCL and to learn the system and the procedure and, sir, learn the system and the procedure, and, sir, in the coming year, maybe I can contribute to the HPCL as I climbed up the ladder, or maybe, sir, 5 years down the line, I can supervise a group of engineers. Sir, my long-term goal is to, sir, to grow over time in the HPCL organization and to become a member of the board of the directors. So everyone who is coming for interview wants to become director, board. Okay. Is this possible that all of you, all the students we are selecting this time, all will become director? No, there is sir. only one director at a time. Yes, so sir, how but is we this can possible? yes, sir. Sir, Okay, but we can aspire. What is the probability of your Probability, sir, becoming as a director? sir, it depends on the, sir, one's hard work and dedication, sir, toward the organization, sir, I think. Sir, because in, sir, the recent director, Kumar Joshi, is also joined as a, sir, as a engineer integrated, sir. Okay. So should we increase number of directors in HPCL? No, sir. Sir, Okay. it's over time, sir. Become. Yeah. About your family, you mentioned that your father is a farmer. Yes, sir. Okay. So can you tell us some schemes of Indian government in favor of farmers? Yes, sir. Sir, in Bihar government, sir, there is a scheme for providing diesel to the farmer at the lower cost. There is a scheme for subsidy on the electricity at the fuel at the through irrigation. In irrigation, we use generally motors for irrigation purpose. There is also a subsidy for that in electricity. There is also a subsidy of sir, crop and fertilizer, yes, sir, fertilizer subsidy. Okay, so have you gone through the union budget, latest budget passed by Indian government? No, sir. No. Do you know what is economic survey? Yes, sir, economic survey. So what is that? The economic survey is the, sir, the survey by the, sir, Indian government about the economy, that how means that, sir, how the so when economic survey is announced? At the, sir, in end of February. End of Feb or beginning of Feb? End of Feb. So end of Feb means it will be announced later, na? No, sir. Beginning of Feb. Oh, sorry, sir. Okay. अच्छा, बजट कौन सी डेट को पास हुआ है रिसेंटली, इतना तो बता सकते हो? Sir, it happened date, I think 28, 29, sir, I am not exactly. No idea? No, sir, I haven't, but I heard, sir, the recent. अच्छा, अपनी क्या क्या हॉबीज हैं वो बताओ जरा. Sir, my hobby is cooking
and exploring the new technological gadgets and exploring the new technology. ओके, कुकिंग और नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना, तो लेटेस्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर किया आपने? Sir, I have explored the new technology about virtual reality, augmented reality, sir. क्या होता है ये वर्चुअल रियलिटी? Sir, virtual reality, it gives the experience of immersive experience of virtual environment by wearing a headset. If we wear this type of headset, we are immersive in a new type of environment. Through this, we can many things like play games, watch movies, and we can, yes, sir. And augmented reality, sir, it's different than virtual reality. It's give more about the outer environment rather than the only focusing on the display of the headset. अच्छा, श्री रामचरितमानस के राइटर कौन है? तुलसीदास। और रामायण के? रामायण के वाल्मीकि, सर। ओके, कोई वीकनेस बताओ अपनी। यस, एक्सक्यूज मी। वीकनेस कोई है? वीकनेस? यस सर। Sir, I am, sir, lacking in, sir, effective time planning, sir. Suppose, sir, I assign something task for a day, but sir, sometimes, sir, I become restless if I am not able to complete the given task at the end of the day. So, sir, I can say that, sir, I am lacking, sir, effective time planning. Okay. So, when did you feel this and what did you do to remove this negative point from your personality? Yes, sir. Generally, sir, nowadays, sir, I used to, sir, I used apps like in mobile, sir, to generally schedule my time in given time, sir, I can complete my work. This type of things I do, sir. I generally put reminder on. Is this right to become fully dependent on mobile gadgets, electronic gadgets? No, sir, it's not fully right, sir. But I think, sir, over time I can improve my habit so that, sir, later I am not dependent on this mobile gadget. But for, sir, for a shorter period of time, for generally improving the habit, I think, sir, it can be useful for short time. Any interesting incident of your life you want to share with us? Interesting, sir. Interesting, sir. I think, sir, in my B.Tech, sir, there is the interesting in the during my fest, cultural fest, there is an interesting activity and that I have participated there, sir. क्या इंटरेस्टिंग था उसमें? Sir, I have participated in that cultural activity and or the singing activity, sir. Okay. विशाल सर? Yes, hello, sir. Thank you. Yes, Amit, so you are preparing for HPCL. Yes, sir. Amit, you are aware about the which particular agency actually controls the crude oil price? On what factor crude oil price depends? Crude oil, sir, price depend upon, sir, the factors like, sir, the production, how much the crude oil is produced by the country, and it's also depend upon the, sir, market requirement. And it's yes, sir. It's also depend upon the government policy of the or the You know, in international market, crude oil price is actually it is there in dollars. Okay. Yes, so sir. if in international market dollar is becoming weak, what do you feel, the crude oil price is going to increase or decrease? Dollar is becoming weak. Yes, sir. The crude oil price will, sir, decrease, sir. If dollar is becoming weak, the crude oil price will decrease. Why? Sir, I think, sir, for Indian market, sir, I think it will decrease.
Sir, as the dollar is have become more strong, sir, it uh, our Indian rupee values are getting low at a lower, and if dollar price becoming low, then maybe one Indian rupee $1 can be 60 rupees or this time. That's why I'm saying that. Mhm. Okay. What is specific gravity, Amit? Specific gravity is weight of a substance upon volume. Weight of a substance upon volume. Yeah, So that is weight density, weight by volume. yes, sir. I'm asking you specific gravity. Specific gravity is same, sir. Rho g. Means weight density is the specific gravity. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Yes. Specific gravity is also known as relative density, Amit. Uh, Relative density is, sir, I think different term. You heard about Sir, API gravity? API gravity. Yes, sir. I've heard about it. What is that? API gravity is a performance index. I think I'm not recalling. Amit, what are Newtonian fluids? Newtonian fluids are those that which generally the stress and the rate of shear strength are directly proportional, which vary linearly. So can you give me some example of dilatant fluids and how you can define dilatant fluids? Dilatant fluids are those which generally be plot in a graph. His slopes are increasing. Um, Slopes are increasing, and example we can give about dilatant fluids are I think um, um, blood, mm, blood milk. Yes, sir. I think yes. So dilatant are shear thickening or shear thinning? Dilatant shear thickening. Shear thickening. I'm sir. I'm doubt, sir. I'm not shear thickening. Mm-hmm. Yes, sir. I think shear thickening. Amit, you heard about vorticity in fluid mechanics? Yes, sir. What is that? What is the significance? Vorticity, sir, is defined as, sir, in the term of rotationality of the fluid element. Sorry, vorticity is in mathematical terms, sir. Vorticity is uh, two times the uh, rotation of omega. Vorticity, yes, sir. Two times the What is the rotational. significance? Significance. Vorticity is, I think, sir, it is just a physical term. I think it has no significance, sir, because we can already define the rotational of the fluid. Yes, sir. It's just a new term. Amit, can you tell us something about the Bernoulli's equation? On what assumptions we derive Bernoulli's equation? Assumptions, assumptions that we make while deriving Bernoulli's equations are a steady flow, incompressible flow, flow along a streamline, um, a steady flow, incompressible flow along streamline, non-viscous flow. Yes, sir. Hmm. Good. Amit, what is zeroth law of thermodynamics? Zeroth law of thermodynamics, sir, states that, sir, um, suppose a body is in thermal equilibrium with uh, suppose a body A is thermal equilibrium with B, and there is a body C which is thermal equilibrium with body B. Then we can say that A and C both are in thermal equilibrium. Hmm. What is enthalpy, Amit? Enthalpy is, sir, the energy stored by the
flowing by some fluid. Yes, sir. Energy stored in a fluid. We can define it enthalpy. Okay. You heard about bomb calorimeter. Yes, sir. How it works and for what purpose we use this? Bomb calorimeter is used for bomb calorimeter, sir. I think it's used for calorific measurement of the calorific calorific value of the fuel. कोई principle बता सकते हो? What is the principle of measurement of calorific value? Principle. But not recalling that one. ये bomb क्या होता है? You know, in this particular calorimeter, the word bomb which you are using, what do you mean by bomb? Not recalling, sir. Amit, what is cetane number? Cetane number is, sir, generally assigned to the diesel fuel for knowing about the its characteristic of the diesel fuel, about how the calorific value, how its rating, for providing generally the rating of the diesel fuel. So what are the reference fuels we consider to measure to define the cetane number? Cetane number. Reference fuels we use naphthalene. Naphthalene, I think. Mm-hmm. Yes, sir. Naphthalene. Yes, sir. I'm forgetting. Naphthalene. Have Something alpha methyl. alpha methyl naphthalene, sir. So how much is the cetane number of that? Cetane number, sir, 100%. 100 cetane number. 100%. No. चलो अमित टर्बो चार्जिंग क्या होता है? टर्बो चार्जिंग, सर, जनरली हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं, सर, एयर डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसका मास एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए, सर, जिससे कि हमारा व्हीकल का कंबसन मतलब इम्प्रूव हो सके. What do you understand by characteristic dimension? Characteristic dimension is, sir, generally used in fluid mechanics and heat transfer for calculation purpose in use in Reynolds, for calculating Reynolds number, or suppose be using heat Amit, transfer. why we will select you for this position? How you are different from other candidates? Sir, as of the, sir, training and the, sir, project I have gone through, sir, I think it's my interest to, sir, work in the energy sector, sir, and I can contribute in the fields like in, sir, the HPCL is working in biodiesel. Sir, I have done my project on this, sir. I think, sir, Tell us brief about that project and what work you carried out. Sir, in this project, sir, what I have done is, sir, the numerical I have done the numerical analysis of the biodiesel, Jatropha biodiesel in diesel engine. I have checked the performance, how the performance and what is the effect of by using biodiesel in diesel engine. There is effect on performance and combustion. Sir, I have done a blending of Jatropha biodiesel. In 3 blending I have done. First, I have used 25% mineral diesel and 25% biodiesel. In the second, I have used 50% both, and the third, I have used 75% biodiesel and 25% biodiesel. And I have checked the performance, how the exhaust temperature varies by using this biodiesel, and what are the practicality we can use to. So tell us the important conclusion of your research, Amit. Yes, sir. Sir, I have observed that, sir,
that if a specific fuel consumption generally reduces while we increase the percentage blending of the biodiesel. But there is a reduction in the exhaust temperature if we use more biodiesel. There is also um, uh, also there is a specific conjunction. Brake power is generally at a higher blending, and we observe more brake power. And sir, also there is a exhaust temperature reduction is there, and there is also a significantly reduction in the uh, emission of carbon dioxide from the exhaust gas. Yes, sir. And what are the challenges with that, mixing? Yes, sir. There are sir, many challenges, sir. And there is first of all, sir, before the production of this type of crops, we need a huge amount of land. And sir, as it is already known, sir, that India is a country where the food is very much required. So for producing this type of crops, it is a very challenging task. And also, sir, there is a very much we get very much less oil from the seeds of this type of plant. So it's also a So challenging from task. where you got Jatropha based biodiesel? So Jatropha is readily available, sir, in our So area. you carried out the extraction, Yes, sir. like where, like in your lab? Yes, sir. Yes, sir. Generally, in extraction is not carried in our lab. I used some home meal, sir, in market. Means directly you purchased biodiesel or? No, sir. I have done extraction. Hmm. So that kind of facility was there in your institute? Institute is not, sir. I have generally the supervisor told me that you have to go to some market mill and extract from there. No, like you mentioned that project you did during your masters or what? B.Tech? Master. Master, sir. At NIT Patna, you Yes, mentioned. sir. Yes, sir. Okay, Amit. What do you think, sir? I think now we can provide him feedback, sir. Let me first provide you the feedback, then Tyagi sir is also going to interact with you. देखो इसको थोड़ा सा क्लियरली बताओ. इट्स गुड यू डिड सम वर्क ऑन सम बायोडीजल बायोफ्यूल. बहुत क्लियरली नहीं आप बता पा रहे हो. इट इज गुड टू गो फॉर सम स्नैप्स विद मी और विजेंदर सर आर रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट वर्क. अमित, बाकी आपके इसमें फिर भी आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली बता पा रहे थे कि आपने क्या किया एंड यू हैव शोन योर इंटरेस्ट एक्चुअली इन डिस्क्राइबिंग की व्हाट वर्क यू डिड. बाकी आपके जो आंसर्स है वो एवरेज हैं, ठीक ठाक हैं. बहुत अच्छे आंसर्स आप नहीं कर रहे हो. आंसर्स इंटरप्टेड भी हैं, एनर्जी लेवल भी लो लग रहा है वहां पे. ठीक है, तो थोड़ा सा इंप्रूव करो. एंड आप अपनी स्ट्रेंथ्स में ये बता सकते हो कि सर आई एम हैविंग very high interest in oil and gas sector. Even sir, I have chosen some project based on oil only during my masters, and then you can highlight about that. ठीक है, तो पहले मेजर किसको रखना है कि मेरा इंटरेस्ट है इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में. then you can relate your work and some brief about that you can mention, and very quickly you need to move to the second strength. तो स्ट्रेंथ पूछा जाएगा तो स्ट्रेंथ बता देना है. आपको थोड़ा बता के रुक जाना है, आपको नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करना है, ताकि अगर इंटरव्यू पर चाहेगा तो ही विल आस्क यू सम क्वेश्चन. Yes, sir. ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा टेक्निकली अपना ब्रशअप कर लो. जो कंसेप्ट्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक, फ्यूल रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे आप वो क्वेश्चन आंसर करने में जो मैंने आपसे पूछे. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ विस्कोसिटी के बारे में. ठीक है, विस्कोसिटी मेजरमेंट, बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज. स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चे क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड. को ही तो बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. नहीं, आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को वेट डेंसिटी के साथ मिक्स कर दिया. नहीं सर, इसमें कभी कम कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे क्या है सर, इसमें एक रिलेटिव डेंसिटी भी है और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी. दोनों को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं. डिफरेंस क्या है? जब रिलेटिव बोलते हैं तो रिलेटिव किसी के भी कंपैरिजन में हो सकती है. रिलेटिव डेंसिटी मींस डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन कंपैरिजन टू एनी अदर सब्सटेंस. relative density you can even define for water in comparison to wood also.
इन कंपेरिजन टू कंक्रीट ऑल्सो। बट जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटिव डेंसिटी, बट वहां पे नियम क्या है, रूल क्या है, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में तो कोई भी दो सब्सटेंसेस का एक दूसरे के रिलेशन में आप डेंसिटी बता सकते हो, रिगार्डिंग। तो है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इज ए काइंड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ना, बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड, रिगार्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. अब उसमें वेट डेंसिटी वाला कंसेप्ट रोज ही कहां से आ गया, वो गड़बड़ कर दिया आपने, समझ में आया। वेट बाय वॉल्यूम थोड़ा ना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट बाय वॉल्यूम तो आपका वेट डेंसिटी होता है, Yes, वेट sir. है ना। ठीक है, मैं तो थोड़ा रिवाइज करके जाओ आप इसको। एक्चुअल में क्या होता है, देखो इंटरनेशनल मार्केट में अगर डॉलर का प्राइस गिरेगा ना, मतलब डॉलर अगर वीक हो जाएगा, डॉलर अगर वीक हो जाएगा तो जो आपका रुपया है या दूसरे जो करेंसीज हैं वो स्ट्रोंग होंगी, Yes, sir. तो आप ज्यादा तेल खरीद पाओगे, ज्यादा खरीद पाओगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होता है ना, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ जाता है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगा। जैसे शेयर मार्केट के वो भाव गिरते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग अपने शेयर बेच रहे हैं तो क्या होता है, शेयर मार्केट गिरती रहती है। Yes, और sir. जब बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे होते हैं तो शेयर मार्केट चढ़ जाती है। क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो भी किस पर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। तो आई होप यू गोट आइडिया कि वो यूएस डॉलर का क्या फर्क पड़ेगा। तो रैंडम गैसेस मत करो, उसको थोड़ा सोचो आप। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, अगर डॉलर वीक होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, Right, मतलब very प्राइस आपका good. क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो उसको कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हम यूएस डॉलर में ही क्यों करते हैं। यूएस की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज में से सबसे स्टेबल जो इकोनॉमी, उसको वर्ल्ड पावर इसलिए बोला जाता है, बहुत स्टेबल इकोनॉमी है। इसलिए हम जो डिफरेंट जो एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वो यूएस करेंसीज में करते हैं क्योंकि वो स्टेबल है सबसे ज्यादा। रिगार्डिंग अमित, Yes, sir. Yes, sir. किसी दूसरे देश की जो करेंसीज है वो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाए, बट वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। Yeah, sir. ठीक है, चलो बाकी इस पे मेहनत करो, आप थोड़ा सा क्लियर आंसर करो एंड रिवाइज द बेसिक कंसेप्ट्स। और ये इस तरह की चीजों पे मिस्टेक नहीं करनी है। बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब भी आप किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए जाते हो। बोम कैलोरीमीटर तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना हमें। Yes, ऑयल sir. एंड गैस कंपनी के लिए जा रहे हो, आपको बोम कैलोरीमीटर नहीं पता, कैलोरीमीटर कैसे काम करता है। क्लोज्ड वेसल जो होता है ना उसमें, वही तो बोम होता है, उसी को बोम बोलते हैं। ठीक है Okay. अमित, Okay. तो पढ़ के जाओ इसको कैसे काम करता है, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फाइन अमित। और थोड़ा Yes, सा sir. Yes. एनर्जेटिक रहो, एक्सप्रेशंस चेंज करने चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन अमित लेस आप कुमार, आंसर करते हो, थोड़ा एक्सप्रेशन लेके आओ अपनी डिलीवरी में। ओवर टू यू त्यागी सर। जी अमित कुमार, इंटरव्यू में एक तो घबराने की जरूरत नहीं है फालतू में, थोड़ा एनर्जी लेवल अपना अच्छा रखो, एनर्जेटिक रहो, है नहीं। Yes, sir. और थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, और ये बजट के बारे में देख लो एक बार, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी बजट आया है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बजट से ऑयल सेक्टर के लिए बजट में क्या था, ऑयल कंपनियां बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी बजट में उनके लिए कुछ अलग से आएंगे प्रोविजंस। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा उनके लिए अलग से किया नहीं, तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं ना। और आम जनता के लिए जैसे कौन सी ये टाइप होते हैं, कौन कौन से, पुराना वाला रिजीम, नया वाला सिस्टम, पुराना वाला सिस्टम, क्या डिफरेंस है, थोड़ा देखो। इकोनॉमिक सर्वे, बजट आने से एक दिन पहले गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है इकोनॉमिक सर्वे, जिस दिन बजट पेश होता है ना संसद में, उससे एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें कैसी हमारी प्रोजेक्शंस रहेंगे, मतलब आगे इकोनॉमी के बारे में, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो उसमें बताया जाता है। कौन पढ़ता है इकोनॉमिक सर्वे को, थोड़ा इन चीजों के बारे में भी अवेयरनेस लो, राइट। Yes, yes, sir. Yes. और अपने क्या कहते हैं, बाकी तो तुम्हारा ये तुमने बता दिया था, बाकी ठीक है चीजें। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगी बीच में कहीं पे, और कहीं पे
एनर्जी लेवल बड़ा डाउन सा लगा। दो चीजें मेन है। और मैंने पूछा कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे तुम बताओ अपने बारे में कुछ, तो एकदम से घबरा गए। वो सोचा नहीं था सर वो तो वही तो मैं चेक करना हमको, कुछ कोई भी स्टोरी बना तो एकदम सोच के, उसमें क्या दिक्कत है? कोई कॉमेडी वाली बात सोच लो, कुछ भी। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करनी है ना, कि सडनली अगर कुछ पूछ लिया तो माइंड ब्लॉक हो रहा है या कुछ सोच पा रहे हो तुम। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, उसको डील कर कैसे करोगे, यही देखना है ना वो। ओके। यस सर। और बाकी अपना पीएचडी के बारे में क्यों, अभी तो तुमने एमटेक किया हुआ है ना, पीएचडी नहीं करी ना? नो सर नो। हाँ, तो बता देना कि सर अभी जॉब में ही मेरा इंटरेस्ट है। यस और सर। किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हो अभी? यस सर। ये भी पूछ सकते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मना कर देना। यस सर, मना कर दें। मतलब किसी और, जैसे आईएएस वाईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, यूपीएससी के लिए, इन सब के लिए, तो मना कर देना। इंजीनियरिंग यस सर। सर्विसेज और यूपीएससी का तो नाम ही मत लेना, सिविल यस सर। सर्विसेज। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ये पीएसयू की जॉब में इंटरेस्टेड हो, बस ये बोलना है। यस सर। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू।